Hello. Okay, guys, I'll be adding a Rekindled club, so just give me a moment. Um, just give me 1 minute. Everything is good. Mangalore is good. I'm enjoying Mangalore. I'm just waiting for Abhishek from Rekindle Club to come and join me for this live session. Let's wait for a minute. Hello, 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 how are Sana. you? I'm good. How are you? I'm very technically challenged, so I have my team who does all that. I'm so bad with it, so I just चलते I चलते. have to Okay, so catch catch a life में तुम्हारे. How is everything is life? good. Very, very good. I'm in Mangalore. You Yeah. should also come to Mangalore, and everybody who's Oh here, wow, please nice. come to Mangalore. And so we have an association with the locals here. There's a surf school called Wave Surf School. You can come here and learn how to surf. You Hmm. can learn more water sports as well. So you should get your team here, Hmm. or maybe you should do Rekindle Club ka retreat here. Isn't it retreat in Yes. Mangalore? Nice. Nice, makes sense. But I like colder climate. Yeah. I am from Bombay. I've lived in Bombay, so I like something cold. You know the Delhi winters. You I remember? don't like I it love it. at all. So I missed Delhi winters because you've lived there for a very Yes, long time. So yeah, I miss Delhi I winters. don't What at do I all. say? Chicken. So let's start. Yeah. So I mean, let's start with a Okay, quick fire, rapid fire. first because Are you you are ready? not used to live sessions and आपको नहीं पता कैसे करते तो maybe first you should introduce Rekindle Club here so that people get to know what Okay. Rekindle Club is. Okay. 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 So Rekindle is an exclusive platform for previously marrieds. It is something that we are building. It's a dating platform. And the prime reason that we have started it because, first of all, nobody's talking about dating. Everybody is talking about financial freedom and women empowerment. But let's also talk about something which is very critical. People who are at 40s or 35 and who are separated or divorced or who have lost someone are also sort of lonely and they want to date people and they would like to be in a relationship. And I it's sad to see that nobody's talking about it. So it is it's right now it's a dating community for previously marrieds right now for India, but we'll be launching Mm-hmm. soon in US as well, mostly by December and then in January. The app is on Play Store and App Store. You can download the app as well called Rekindle Club, and yeah, so Perfect. So basically, you're this is something trying that I to really think. break barriers in some way because in our country, it's still a taboo. Usually, people, so because I Hmm, belong to a family where my parents got divorced when I was quite young, but getting, dating I again, see. either it is you get divorced and then directly get Hmm, into a marriage again. People don't consider dating or understanding the hmm, person. So ये वाला concept है नहीं इंडिया में. So it's a very good concept, correct. and let's start with the live session. Thank you. You can start with the yeah. You Let's can. start with the live session. Yes. First of all, you tell me what are you doing? Like, what do you do? What when you say you are a Okay, so I'll practitioner, tell you a little bit about myself. I what got into exactly is healing your about five yeah? years back. I started with chakra healing, crystal Hmm. healing, that got into mind body relationship. Can you hear me?
I can hear you now. I think there was a So I lag. started from energy healing, then got into mind body relationship, then started practicing Louise Hay's Hmm. therapy system, which is more about understanding what thoughts. So जो भी हमारे थॉट्स है, Hmm. थॉट्स एनर्जी है. जब हम हैप्पी होते हैं बहुत सारा एनर्जी निकल जाता है, पर बहुत सारा एनर्जी हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट करता है या स्पेस ढूंढता है, एंड इट टर्न्स इनटू अ एलिमेंट. So I Hmm. started understanding कि how Hmm. हमारे thoughts हमारे body पे क्या क्या कर सकते हैं, and how we can release those thoughts and feel better. Then about 1 year back, and Hmm. throughout this process, like I've been this person जो हमेशा, because I wanted to find solutions for myself. Hmm. So I've been this person जो हमेशा Hmm. मेंटली चीजों को ढूंढती थी कि अच्छा इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल तो मेंटली इसका क्या रीजन होएगा. बट अबाउट 1 year back, Hmm. one of my very close friends introduced me to breath work, and I think that Hmm. is something. And जैसे breath work के बारे में बात करूँ, याद आ रहा है कि ठीक है सांस लेके बात करो because एकदम से भागने लग गए. क्योंकि तुम नहीं लोगे तो Yeah. तुम मर जाओगे. So Okay. breathwork changed my Okay. life, and I think मेरा thought process, क्योंकि हम Hmm. humans को ना आदत होती है चीजें ढूंढने की कि क्यों ये हो रहा है, क्यों हो रहा है. I understood in this Hmm. last 1 year कि Yes. जरूरी नहीं है कि कोई mentally कोई reason होना चाहिए हमारा low feel करने के लिए. You know, sometimes हम लोग टाइम से नहीं सो रहे, टाइम से नहीं उठ रहे हैं, हम लोग अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, और सबसे बेसिक चीज है हम लोग, जो मैंने 1 year में देखा है अपने प्रैक्टिस के, कि हम लोग ढंग से ब्रीद ही करना भूल गए हैं. जब हम बच्चे होते हैं, एक बेबी का आप देखोगे बेली एक्सपैंड Correct. होता है जब बेबी Hmm. ब्रीद करता है, और फिर मतलब वो बेली Hmm. मूवमेंट होता है. Hmm. लेकिन विद टाइम हम लोग, क्योंकि हम लोगों Hmm. को, हम लोग कॉन्शियस लोग हैं और एक फास्ट लाइफ भी है, बट ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ वो सिक्स पैक एब्स के वजह से भी सब अपना Hmm. स्टमक अंदर करके रखने लग गए, फुली ब्रीद नहीं करते, Hmm. जिसके वजह से बहुत लोगों का आई थिंक ब्रीदिंग Hmm. उल्टा Hmm. हो गया. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई थिंक आर स्ट्रेस्ड और एंग्शियस जस्ट बिकॉज उनका ब्रीदिंग सही नहीं है. सो ब्रेथ वर्क इज वन थिंग जो मैं 1 year से थोड़ा कर रही हूँ, एंड इट हैज चेंज माई लाइफ, एंड आई वुड सजेस्ट कि सब Hmm. लोगों को ब्रेथ वर्क एक बार ही ट्राई करना ही चाहिए. How has it changed your life, if I may ask? How has it changed your life? सो आई वॉज अ पर्सन जिसकी लाइफ में बहुत सो हाईज एंड लोज रहते थे, बहुत अच्छा चीजें भी होती थी, फिर बहुत बुरी चीजें, मतलब मेरे को लगता था कि सब कुछ बहुत बुरा भी है. इनफैक्ट अभी भी अगर सिचुएशन देखोगे तो ओवरऑल वैसी ही Hmm. सिचुएशंस है इन टर्म्स ऑफ जो भी चीजें मेरे को तब ट्रबल करती थी. बट नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट दोज Hmm. थिंग्स, मेरा द वे आई थिंक अबाउट दोज थिंग्स इट हैज चेंज्ड कंप्लीटली. अब मैं irrationally Hmm. नहीं सोचती हूँ. अब मैं आई थिंक, एंड ब्रेथ ऑल्सो गेट्स मी बैक टू दिस मोमेंट. मेरे को, मैं ज्यादा पास्ट में नहीं रह रही हूँ कि Okay. अच्छा मेरे पास्ट में ये बुरी चीजें हुई तो मैं उसी Hmm. के पे फोकस कर रही हूँ, या जो मेरे पास अभी मेरे को लगता है कि मे बी मेरा एक ये चीज होती है कि हमको लगता है कि अच्छा ये बेस्ट केस सिनेरियो ये होता तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती, बट वो बेस्ट केस Hmm. सिनेरियो तो कभी हुआ ही नहीं. ये है Yeah. मेरा बेस्ट केस सिनेरियो इस मोमेंट में. Correct. Yeah. Wishful thinking. So Yeah. I Yeah. think it Yeah. just Correct. brings me Correct. back Correct. to the present moment, and definitely my thought process has Hmm. changed in terms of, मतलब बिल्कुल इरिटेट होके फ्रस्ट्रेटेड होके नहीं सोचती हूँ, थोड़ा शांत माइंड से सोचती हूँ, तो अलग पर्सपेक्टिव से भी चीजें देख पाती हूँ. Interesting. So, do you do sessions? I Sessions कराते हो? I Do you have do these I do few online online sessions. sessions So that you? मेरे online sessions में मैं breath work भी सिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा, because I wouldn't say कि Hmm. I'm breath work expert. I'm still a practitioner. I'm still learning myself. But जो main चीज है, मैं journaling पे बहुत focus करती हूँ. Journaling What's is, your in a day एक normal human mind में about 68,000 thoughts आते हैं. Up 68,000 thoughts, yes. And now because your 68,000? app is about relationships and finding love, अब मैंने लाइफ में Uh-huh. सोचा होगा कितनी बारी कि मेरे लिए एक परफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, बहुत बारी, राइट. एंड अगर मेरे को इतने सारे थॉट्स एक दिन में आ रहे तो मेरे थॉट्स अबाउट रिलेशनशिप भी बहुत सारे होंगे. But when I sit down, when I Hmm. write about, okay, what I really want in a relationship,
now it is no more just vague thoughts. वो थोड़ा वो मतलब हम लोग छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे आ पाते हैं, चीजें समझ पाते हैं. सो इससे पहले इन लाइफ ऑल्सो आई थिंक ऑल माई प्रीवियस रिलेशनशिप्स आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर लव कि हाँ मेरे को अच्छा फील होना है, और एक्सपेक्टेशन थी वो परफेक्ट रिलेशनशिप जो मेरे माइंड में कि हाँ ऐसा होना चाहिए. अब वो मैंने 10 कपल्स को डिफरेंट टाइम पे देखा होगा, मेरे को लगा हाँ ये पॉइंट इनका अच्छा है परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए. Now when I understand okay what I really want in a relationship, मतलब कुछ चीज होती है ना जो हम लोगों की नीड्स होती है, जो हमको चाहिए ही चाहिए, ऐसा हर इंसान के लिए वो अलग होगी. बट जर्नलिंग के थ्रू व्हेन आई राइट डाउन अबाउट व्हाट आई रियली वांट, मेरे टॉप 5 चीजें क्या है कि ये मेरे को अपने पार्टनर में चाहिए, एक क्लैरिटी आता है थॉट्स में. And then when you meet your partner, you just know, okay, ये 5 चीजें तो है ही, टिक हो जाते हैं. So you have that checklist when you see someone. Yeah, so journaling. But then don't you think it's a bit between two individuals? Like, so coming back to the point of relationship, isn't it between two individuals? So आपको 5 चीजें अच्छी लगती हैं उसके बारे में, तो उसको भी तो आपके बारे में कुछ 5-6 चीजें अच्छी लगनी पड़ेंगी. What I feel, जो मेरे को लगता है एक रिलेशनशिप में दोनों लोगों को अपना नीड्स, अपना वांट्स, दे शुड पुट दैट ऑन द टेबल. दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज व्हाट आई वांट. एंड कम्युनिकेशन, आई थिंक really bad at communicating all my life, like all my life. You won't. Okay. आपको नहीं लगेगा because आप मेरे आसपास रहे हैं, you've been my friend. But if you talk about relationships, I've been like very bad. But yeah, जब दो लोग clearly communicate, I kind of have a vague idea. I have a vague idea because I saw you with one of your boyfriends, if you remember. Yeah. I have a vague idea. उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम था कि मैं communicate नहीं कर पा रही थी, and that's the reason that relationship turned into, I wouldn't say a bad relationship, but it ended. अगर मैं उस टाइम पे मेरे thoughts में clarity होता कि okay, this is what I want, एंड मेरे पार्टनर के थॉट्स में क्लैरिटी होता है कि उसको क्या क्या चाहिए, और हम वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते, तो आई थिंक इट वुड हैव वर्कड आउट. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट एक इंसान का नीड्स सैटिस्फाई होना चाहिए, वांट्स सैटिस्फाई होना चाहिए. दोनों पार्टनर्स, हाउ टू पीपल हैव टू लिव टुगेदर. जब तक वो सिंक नहीं है और जब तक आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं है. अभी क्या होता है ना, इससे पहले now in my relationship maybe मैं अपने पार्टनर को जाके बोल पाऊंगी कि ये चीजें मेरे को ऐसे चाहिए, लेकिन आज से 1 साल पहले तक या 1.5 year 2 years पहले तक मेरे को क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन मेरे को एक अपने पार्टनर में अच्छी चीजें चाहिए. now ये कितना irrational thinking हो गई कि हाँ मेरे को खुद क्लैरिटी नहीं है कि क्या मेरे को अपना अच्छा चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप समझो अपने आप कि आप वैसे अच्छे बन जाओ. Correct. And this is what happens in most of the relationships, be it friendship, be it your relationship with your parents. We just expect things from people, but हमारे को खुद ही नहीं पता है कि हमारे को exactly क्या चाहिए दूसरे से. So I think journaling बहुत. So when people come to you, okay. So when people come to you, so for example, somebody who has gone through a very bad breakup or a divorce or who has lost someone, what do you tell them? Like, do you tell them a solution? Do you are you like do you absorb their sorrow? Like, are they, first of all, the question is, are they really sad when they come to you, or they are really, so I know what state of mind they are? Who've been married for like 4 months and उससे पहले 2 साल का relationship था, and then एकदम से something happened in marriage and things did not work out. So obviously I think हर इंसान को relationship end होने में एक sadness feel होता है, and my work is not to tell somebody what they should do and what they should not do. My work is कि मैं कैसे उनको हेल्प कर सकती हूँ हील करने में, या जो अभी स्टोर्ड इमोशंस है उनको रिलीज करने में. बिकॉज एक रिलेशनशिप चाहे कितना भी बुरा हो, 2 लोग जब साथ रहते हैं कुछ तो अटैचमेंट होता ही है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं लोगों को बोलती हूँ कि, और जो मैं खुद भी, बिकॉज आवर जनरेशन
ऐसा जनरेशन है कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे मूव ऑन करते जाते हम लोग ना उस मोमेंट में रह के वी Yes, डोंट फील absolutely. आवर इमोशंस कंप्लीटली। और इतना फास्ट पेस वर्ल्ड हो गया है कि हम लोग बस उस टाइम पे इग्नोर कर देते हैं। बट अगर आप जिस मोमेंट में चीजें हुई आप इग्नोर करोगे Mm. शो करने लग जाएगा। यू नो बिकॉज एक बैड रिलेशनशिप की वजह से बहुत सारे Mm. फियर्स डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे इनसिक्योरिटीज डेवलप हो जाते हैं। तो उन सारी चीजों पे वर्क किए Correct, बिना correct, आई absolutely. आई डोंट थिंक अ पर्सन शुड मूव अहेड। Mm. लाइक एट दैट मोमेंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग, अंडरस्टैंड दैट ओके फिर रिलेशनशिप डिड नॉट वर्क आउट, इट इज फाइन। हर दो इंसान साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है ना Mm. कि हर इंसान एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्न थ्रू दीज ईयर्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी है कि हम लोगों को ना किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप एंड होता है, और मैंने भी एक टाइम पे किया है जब उतना समझ नहीं था कि यू नो आई यूज्ड टू Mm. ब्लेम माय एक्सेस कि वो ऐसा था या वो वैसा था। एंड विद टाइम आई अंडरस्टूड कि कोई वैसा नहीं था, हम लोग एक दूसरे के लिए एनर्जी वो सही नहीं थी। So we need to forgive the other person and we need to Mm. forgive Mm. ourselves also. If we feel कि हमने कुछ किया है, then we need to Mm. feel whatever emotions we are feeling and not suppress the emotions. And only when we feel that we've healed Yeah, yeah, completely, makes sense. then move ahead. Because I think love is Mm. a beautiful thing, and I've kitta bhi try kar lo to stay away from it. Like even my last relationship ke baad, I was like, no man, I don't want to be in a relationship ever. And then I just met someone. Things just Mm. happen, and life is beautiful now. Mm. But tell me something. Do you think there is a healing period or a time frame where people after a divorce should actually have a cool off period and then start dating? Because I see a lot of people in my friend circle as well that they got a divorce or they had a bad breakup. Next day they Yeah, started looking out for partners. I don't Is that think it is healthy healthy or is because it? वो ये rebound वाला चीज हो गया। And then at the end, uh, Hmm. वो ना अब खुद you get into toxic patterns, and if not toxic patterns for yourself, for the Hmm. other person, क्योंकि अब जिसके साथ वो rebound Hmm. relationship में हो उनको नहीं पता है कि ठीक है ये this person is not over whatever they were into, either you are very clear about okay my Hmm. physical needs are ye and this is why I'm going ahead. But if somebody is going ahead for emotional Hmm. Hmm. satisfaction, for love, for genuine care, for a genuine relationship, I don't think it can happen ऐसे कि आज हम एक जगह से निकले दूसरे जगह अगले दिन चले गए, Hmm. until and unless you were never into your first Hmm. relationship or the existing relationship that you had. So and सबका ना time Hmm. period अलग होता है. Now somebody like me who's like super emotional will take a lot of time to heal from things maybe. Hmm. And personally also Hmm. Hmm. all Hmm. my experiences when I broke up and if I got into rebound relationships, I don't think that was good for me or the other person. And eventually it became very toxic. And just for our satisfaction वो momentary अच्छा feel करने के लिए क्यों long term stress लेना है? So I really think that we should wait for Hmm. some time, get fine with ourselves, work on whatever has happened, process things properly, and then move forward. Hmm. Absolutely, I 100% agree. But isn't it easier said than done? So, when you To get wait into a for rebound relationship, yeah, so how when do you you get ease into out a that rebound, process? it's Hmm. about momentary happiness. क्योंकि आप rebound relationship में you're going for that Hmm. momentary happiness. And then in that relationship, after a certain time, you Hmm. realize, okay, what is happening? Things are not fine. And then again, आप एक stressful time से जाते हो. तो ऐसा
So does it change your personality as well with these I experiences that I you're talking think about? Does it Malab change you as a change, human being? like change is the only constant, right? Every minute we are changing. Everything that Hmm. happens, every experience of ours, मतलब कुछ ना कुछ तो effect होता है ना. So change is the only constant, and everything in our Hmm. life changes us. Hmm. So definitely. Hmm. So how have you changed in the last 2, 3 years? Like what has changed? How I have not seen you for like 2 years now. So how have you changed? So I think now, so when it comes to relationships, especially, because I think of a lot of things from my childhood and how things were when I was a kid, I I Hmm. I felt love deprived for a very long time, and that's the reason I was like एक relationship के बाद दूसरे relationship में, उसके बाद तीसरे relationship में, मतलब वो जैसे आप बोल Hmm. रहे हो ना कि एक relationship से निकले नहीं दूसरे में चले गए, वही वाला मेरा भी Hmm. cycle था. Hmm. एंड आई थिंक मेरी लाइफ में Hmm. जितना भी स्ट्रेस रहा है, जितना भी डिस्कम्फर्ट रहा है, आई जस्ट वांटेड जस्ट सम कि कोई बस मेरे साथ हो, कोई बस होना चाहिए, क्योंकि मैं अकेले चीजें नहीं कर पा रही Hmm. थी. एंड आई थिंक आफ्टर दैट, सो with my ex-boyfriend, I broke up almost 1.5 year back, and then I was fine. I wasn't looking for love again. I wasn't looking for relationships. I wasn't looking for anything. I took out some time in life कि ठीक है अभी, and consciously I did this. Definitely, like, when you get out of a Hmm. relationship, there are more people with whom you can get in a relationship. But at that point of time, I consciously decided, okay, Hmm. अभी थोड़ा टाइम मेरे को ये साइकिल में नहीं जाना है. लेट मी जस्ट बी बाय माई सेल्फ, अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं पुराने रिलेशन से फ्रस्ट्रेटेड Hmm. निकली थी बाहर. मैं ऐसे वे में निकली थी जहाँ पे मैं अपने Hmm. एक्स को Hmm. बहुत ज्यादा ब्लेम कर रही थी. तो मेरे को भी उस पॉइंट में आने के लिए कि ठीक है, Hmm. कोई भी रिलेशनशिप एक इंसान से खराब नहीं होता है. आई मस्ट हैव बीन इन अ सर्टेन वे, एंड मेरे पुराने रिलेशनशिप की चीजें मैं मे बी उस पर रब ऑफ Hmm. करती होंगे. So I think now I'm not that person. Hmm. Even now when I'm in a relationship, ऐसा नहीं है कि मैं बस एकदम से relationship में आ गई क्योंकि मेरे को आना था. It Things just grew with time, Hmm. and I think अब थोड़ा sensible हो गई हूँ मैं इन चीजों को लेके. Um, I'm not insecure in love at all. मैं पहले बहुत वैसी थी कि मैं ज्यादा प्यार नहीं दिखाऊंगी Hmm. किसी को, क्योंकि इसमें ऐसा लगेगा कि आई हैव अपर हैंड इन द Hmm. रिलेशनशिप. मैं बहुत ऐसे रहती थी. नाउ इट्स Hmm. लाइक आई अंडरस्टैंड, दो इक्वल लोग होते हैं. यू डू गुड, यू डू योर पार्ट, द अदर पर्सन विल डू देयर पार्ट. सो हाँ, थोड़ी तो बड़ी हो गई हूँ इस सब चीजों को Hmm. लेके. I have a question. मेरे को एक क्वेश्चन आया ना. You can tell me it's a dumb question because मैं ऐसे सवाल पूछता रहता हूँ. Now there is a suppose you have Hmm. love and happiness, love on x-axis and Hmm. happiness on y-axis. Now do you think loving someone more will make yourself more happy if you draw the graph, or loving has nothing to do with happiness, and loving is another, and you can kind of I segregate between love and happiness? Like, do you think it is I interrelated? just think no. So love is not only about being happy all the time. I think love is about being Hmm. together when both the people go through bad times, go through lows. Um, I think love is more about sticking with the Hmm. other person when life is not so good. Yeah, when two people are together, happy days aate hain, happy parts aate hain. But I wouldn't say love is all happy and all blue. मतलब beautiful नहीं होता है हमेशा love. And Hmm. it's also about how you want to deal, how you want to be in love. I think एक अच्छा pure honest relationship where you genuinely care for the other person, you want to be there whether it's a good day or a bad day. That is love is, क्योंकि happy times में तो सभी आपके साथ है. And definitely love is not about Okay. happiness and being happy all the time. So what do you tell people who have moved out of a relationship, of a marriage, of consciously taken the decision to divorce someone
just so that they choose to become happy, I think because that's they were the not happy in that best thing. I marriage think and they that's the chose best to. thing. So that's the best thing for entire family. If two people are not happy together, Hmm. in you know what I've seen in मतलब अभी के टाइम पे कि दो लोग साथ में खुश नहीं होते हैं and they cheat on each other and then they go out meet new people. But if you want to go out and meet new people, why not end the relationship? Um, and this is a very big reason कि आज के टाइम में and मेरा भी if you ask me कि marriage के ऊपर से faith थोड़ा हट गया because you know marriage for me is a Hmm. very sacred thing. If two people are getting married, otherwise you can just be in a relationship also, but Hmm. you know you are doing वो इतना सारा steps लेके आप दो families yeah you This are is the next involving step, two probably. families Yeah, yeah. involving so many people. Hmm. You yourself are taking so much responsibility. I think marriage is बहुत ज़्यादा responsibility, right? क्योंकि you have to take care of the other person's emotions and everything and then families and all of that. So if you are not happy together, why do you want to take इतना load? आप खुश भी नहीं रह रहे हो, आप load भी रह रहे हो, आप stress भी ले रहे हो and you're going नहीं, बट जब शादी करते हैं तो उस टाइम थोड़ी चमकता है. शादी हाँ करते but वक्त तो you आपको know लगता है कि यार ये भी हैप्पीली फॉरएवर. when you realize and बट देन. I'm not also saying कि you know आजकल बहुत लोगों का मैंने देखा है कि they get into a marriage and they just get out of the marriage. I'm not saying you know you take your own time, give your relationship some time because when two people start living together, obviously दो लोग जो completely अलग वर्ल्ड से आए उनको एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है. ऐसा नहीं होता कि आप ओवरनाइट एडजस्ट कर जाओगे. even करेक्ट. if even with the people whom you know for a very long time, उनके साथ भी जब आप रिलेशनशिप में स्विच होते हो, अगर फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में स्विच होता है which happened for me also. I think it was मतलब वो मेरे लिए ना बहुत क्रेजी हो गया था. मैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी and it took me time. So we should give time to whatever relationship we are in, but if you feel that you're not happy, it's better to just walk like just end the relationship instead of just being in the relationship and lying all the time. क्योंकि अगर एक दूसरे को झूठ दैट नहीं इज भी ट्रू. बोलोगे आई एटलीस्ट एग्री. बाकी टाइम तो फैमिली से रिलेटिव से सबसे तो झूठ बोल ही रहे हो एंड क्यों वैसे लाइफ रहना है. Oh, we have a question. Okay, interesting. What is cheating according What to you? is बताओ. For me, I think if what is cheating according to you? I think it's Mehakable language. What is cheating according I to you? think cheating starts from lying. If you have to lie in a relationship, that's the point where you are when you start cheating on your partner. That is what I feel. Interesting, interesting. So, आप so ऐसा okay, रोड की lying. So साइड में lying is देख a के form आप of cheating. पॉज हो गए हो. हाँ, मैं क्यों बोल सकता? मेरे को क्या है? मैं तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हूँ. मैं कभी नहीं कुछ बोलता मतलब नहीं. बिकॉज ऐसा आपको वीडियो हो गया था पॉज. Oh, okay. No, I think that is an internet issue, probably. So interesting. Okay, okay. And people lie all the time. I have never seen anyone who has been truthful their entire lives. I know people lie. But I think it's the extent of lie that determines the health of that relationship. ये अब ना बहुत बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं चीज तो बहुत मैंने घटिया. सो थोड़ा थोड़ा ऐसा ना झूठ. हमारी आदत बन जाती है. ऐसे ना हमारी आदत बन जाती है चीजें मतलब लोगों से बात करते करते कि अपने आप को कवर करने के लिए कभी दूसरे को हर्ट नहीं करने के लिए हम लोग झूठ बोलने लग जाते हैं. बट आई थिंक इन Yes. पास्ट 1 year so talking about my relationship in past 1 year I met somebody जिससे मैंने genuinely सीखा कि how मतलब कितना अच्छा लगता है ना कि कोई आपसे पूरा टाइम सच बोलता रहे चाहे वो सच कैसा भी हो. एटलीस्ट आपको ये पता है कि हाँ आपका पार्टनर आपसे आके सच बोलेगा एंड वो बहुत वो एक अलग सा फ्री फीलिंग है. सो लाइक आप भी ट्राई करो आज से करना. मेरे को पता है कि कभी कभी मैं बोल नहीं, मैं तो सच बोलता हूँ. कभी कभी हम दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोलते हैं लेकिन
नेक्स्ट टाइम कभी ना कभी अगर उनको सच पता चलेगा तो वो उनको और ज्यादा हर्ट होएगा. सो आई थिंक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. और एक रिलेशनशिप, यू नो, व्हेन यू गेट इन अ रिलेशनशिप, एक तो पहली बात, आप लाइफ में क्यों एक एड ऑन लेकर आओगे अपने लाइफ में. अब वो जो एड ऑन है, जो आपके साथ पूरा टाइम है, या जिसके साथ आपको बहुत ज्यादा टाइम अपने लाइफ का स्पेंड करना है, उन्हीं से झूठ बोलते रहेंगे तो कितना एनर्जी वेस्ट होएगा हमारा. और फिर वो एक झूठ के बाद दूसरा झूठ. True, और true. इतना फास्ट लाइफ है आज के टाइम में कि इंसान एक झूठ बोल के वो भूल भी जाएगा कि अच्छा ये झूठ बोला था. झूठ याद रखना जरूरी सो है. You are right. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आई थिंक सच बोलना चाहिए, कितना भी खराब सच हो. एंड पार्टनर्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए. सो अगर आपका पार्टनर आके आपको किसी भी चीज से रिलेटेड सच बोल रहे हैं, चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है. पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा हैप्पी रहो कि कोई आके बोलते हैं हाँ मैंने चीट किया और आप बोलो वाओ तूने सच बोला. बट आई तुम थिंक वी सच शुड बोला. अप्रिशिएट द फैक्ट कि वो हमारे को सच बताना चाहते हैं और उनका इंटेंशन में भी सही है हमारे को लेके अभी भी. अच्छा ठीक है. I have a set of questions. Let me just ask. I'll have some versions of the questions that I'll ask you. Okay. सबसे पहले, do you think age matters in any relationship? So I've seen a lot of couples in my life. Okay. I'll have to answer Age yes or no. You have matters. to answer yes or no, and then I have a counter Maybe question. no. Yeah. No. Maybe no. Would you date a 55-year-old man? I'm already right in a now? relationship. Assume if you went. So maybe it does matter a little bit. I don't know actually, Madhav. Maybe if mentally we are at the if mentally I feel connected with somebody, maybe yes. Maybe. We have another question. What's a red flag in a relationship? Tell me your red flag. There are multiple red flags. Tell me your red flag in a relationship. What would be your red flag? क्या जला रही हो? Red flag मेरे लिए होगा. So I think red flag की बात नहीं करूँगी. I just feel, you know, in a relationship when you feel that again and again the same thing is happening and it's not helping you grow and it's pulling you down, just get out of the relationship. Because बहुत बारी हम लोग बस क्योंकि अकेला नहीं रहना चाहते इसलिए वो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते रहते हैं and then we reach a point where it becomes really bad. So जब आपको बहुत आपने यूजुअली लोग बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं रिलेशनशिप ठीक करने का, अगर वो नहीं हो पा रहा है and also if somebody does not respect you, like respect is very very important. अगर कोई गुस्से में है और गुस्से में आपसे बदतमीजी कर रहा है, पोटेंशियल है कि वो आपसे लाइफ में बहुत बारी बदतमीजी कर सकते हैं. फाइंड अ पार्टनर जो गुस्से में भी आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर पाए. Interesting. Very, 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 very valid point. Another question. Would you consider marrying a divorced man? Marrying a divorced man. So for me, I don't believe in marriage. But I wouldn't mind dating a divorced man if मैं single हूँ. Dating. You wouldn't mind dating a divorced man. Okay. What are your pet peeves? What are you annoy you, stress What you? annoys कुछ me? बताओ. Society के norms that you have to be in a certain way. Okay. What do you mean? What is rekindle for you? What I is think your you're trying definition to of break rekindle? the barriers. So somehow you're breaking barriers Okay. for sure. India में तो yes. अच्छा. India में world में I think it's a Yeah, global brand. I don't see especially in rekindle as an India Indian company. because India में Yeah. how I have seen things in my life, people around me,
easy नहीं रहता उनके लिए, you know, to get out of a marriage and then start dating, because people start, especially for females, people start questioning your character. And I have seen that happening with a lot of Mm. people around me. Mm. Okay, what was one before and after in your life, like a before and after or Before and now after. relationship that you So really? yeah, Manav, I I I did not love myself before, and I was always looking for love, and never found the right Mm. person, because I was maybe desperate कि मेरे साथ बस कोई हो पूरा time. So वो मेरा before था. अभी Mm. I think I like myself. Yeah, I am comfortable with Mm. myself, and now Good. I think because I love myself, so मैं irrational expectations अपने partner से नहीं रखती हूँ. मैं भी कभी कभी रखती होंगी. Only my partner can Mm. tell that. चल जाता है, Yeah, like there चल are जाता है. some days when I'm like, okay, give me love. So out of nowhere. Yes, But that's fine. That's yeah, cute. I think Right. now because I am full, I'm Okay. मेरी वो Okay. insecurity कि मेरे को right person नहीं मिल सकता है, वो नहीं है, and वो help कर रहा है एक अच्छा relationship में रहने में और develop करने में. Hmm. There's a question, who can join Rekindle? So Rekindle is actually for people who are previously married. So don't download the app if you're looking for some flings and stuff. I'm gonna block you anyways. I have an algorithm. I'll block you. So don't join all that. If you're seriously looking for a partner, not just for marriage but to date as well, please download the app. And if you're previously married, you are at the right platform. So yeah. You So can. rekindle What do you का think, I Sana? want to Should ask we? you कि कैसे, how do you filter out people? So basically, there is no such technique or a tool to filter out people. However, so a better question is, what if Hmm. somebody chooses to Hmm. lie on a dating app? Right? Like what does Bumble do? Like there are married people on Bumble also, right? Married people on Tinder also, but they claim to be the biggest dating app Hmm. for single people, right? So what if somebody chooses to lie that they are not divorced or a widow? So we ask a set of questions. Even if you lie after that, we ask you for money. Even if you choose to lie after that, we have a content Hmm. moderation team. So we obviously don't read your chats, but we look at Hmm. your user profile. We see what kind of profiles you're swiping. And then there are words that you use while texting. We're not reading your text. We cannot, it's illegal. But there are certain words that you use while texting. And from that, we Hmm. block Hmm. the Hmm. profiles. So if you really want to screw around and you're not serious, Rekindle is not a platform for you. You can choose to go and join Tinder. There are multiple. There are 25 dating apps in this country. You can join the remaining 24. So that's how we keep it more cute. And you will not believe, last week I blocked 250 profiles. I have blocked those users. They were, couple of them were paid as well. And that is bad for business, but I don't see this as a business. I mean, I do see this as a business, but I want it to Hmm. be Hmm. safe Hmm. and curated. So that's how our mission Hmm. is for Rekindle. ठीक है. I have another Class question. में हम लोग, So I if have another question. somebody comes to me, so I just wanted to know ki, if somebody wants you to do sessions, breathwork sessions, and whatever you're practicing, how accessible you are, how do they Um, reach out to you? Is there so a I way to do reach out to regular, your yeah, they can Insta handle definitely or reach whatever? out to me through Instagram. Um, so Instagram handle Hmm. यहाँ पे ऊपर show भी कर रहा होगा. Apart from that, I do regular workshops. I have just started doing these regular online Hmm. workshops also, because I understand कि I cannot be everywhere and people cannot be where I am all the time. And now Hmm. virtual world है Hmm. और थोड़ा टेक्नोलॉजी से मैं भी फ्रेंडली होने का ट्राई कर रही हूँ. So I do online workshops. Breathwork is just a part of it. I am again saying I'm just a breathwork practitioner. I'm not an expert or a coach. My main focus is on these days. I've been teaching people how to journal, especially because the year is ending. So I do a lot of year reflection journaling, and post that we focus on um,
गोल सेटिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर कि आपको नेक्स्ट ईयर आ रहा है, आपको नेक्स्ट ईयर में जाना Right. है, आपकी क्या गोल्स है। हमारी लाइफ के कुछ अलग अलग Hmm. हमारी लाइफ कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो आई थिंक फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस, सेल्फ में जिसमें हमारे प्रिंसिपल, हमारा मॉरल Hmm. वैल्यूज, सेल्फ वर्थ, ये सब आता है। उसके बाद हमारे Hmm. रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, फैमिली के साथ रिलेशनशिप, एज एन Hmm. पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप। फिर आता है आपका फाइनेंस, करियर एंड फाइनेंस। ये कुछ एस्पेक्ट्स है जो हमारे लाइफ के मेन एस्पेक्ट्स है। Okay. हाउ अब ये सारे एस्पेक्ट्स में Mm-hmm. हम लोगों का एक गोल होता है। अब वो गोल क्यों है हमारा, पहली बात तो वो समझना Hmm. बहुत जरूरी है। लेकिन वो समझने के बाद भी हमारा यूजुअली गोल होता है जो हमारी जनरेशन के साथ जा रहा है, बट हमारे बिलीफ सिस्टम जो है वो 3 जनरेशन तक आते हैं। तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स के कुछ बिलीफ्स होंगे Mm-hmm. वो आपके अंदर भी अभी तक होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड Quite एंड possible. एनालाइज कि हमारे क्या बिलीफ सिस्टम है और हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे गोल से अलाइन करते हैं कि नहीं। So I do these workshops जहाँ पे you get to Hmm. recognize your belief system, align it with your goals, and then work on a strategy towards achieving your goals. Also, most of the times problem क्या होती है, we have the intent, we want to do things, but हम action नहीं ले पाते हैं। But the moment when you sit down, write Mm-hmm. down about what you want in life or whatever the topic is. It can be, you know, past reflection या आगे का जो भी आपको goals है, जो भी achieve करना है, आप पहला वो एक्शन ले रहे हो। सो वो इंटेंट और एक्शन का जो गैप है ना, वो Mm-hmm. जर्नलिंग से बहुत ब्यूटिफुली ब्रिज होता है। And then after, you know, when you journal, Mm-hmm. even if you forget about the journal, आप बिल्कुल भूल जाएंगे। आप 1 साल बाद अपनी जर्नल उठाएंगे, आपको समझ आएगा कि उनमें से कितनी सारी चीजें हो गई है, क्योंकि आपके सिस्टम में ऑलरेडी, यू नो, इट्स इन योर सिस्टम। Mm-hmm. Interesting. Interesting. She's very good with these workshops. Of course, you are. I know. Acha, I have a question. Have you used any dating apps before? I have I have बता दो. It's used okay. Bumble. I've used Hinge, but Bumble. I actually am not Okay. very good. I'm not very good at texting. I don't good at meeting people, so I've not used apps itna zyada. I've been on these Hmm. apps, but I'm not a very good texter. So yes. Okay. Okay. So tell me something. What is one thing you would add on in a dating app? Just it could be any random thing which makes no sense, but like one thing you would One add in a thing I dating would app. add in a dating app. Hmm. कुछ भी nonsense भी बोलो, but I mean, I think there is a lot of sense in nonsense as well. Uh, So, I I think कुछ ऐसा होना चाहिए कि जितने भी लोगों का सिमिलर इंटरेस्ट है वो एक, मतलब ऐसे सेक्शन वाइज डिवाइडेड हो। तो आपको बहुत सारे लोगों को स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा है। एंड यू जस्ट, यू नो, फॉर मी लाइक, मतलब बहुत स्टूपिड चीज है, बट आई लाइक no, it's पीपल not. जो एनिमल्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं, या I for me, because I've got Hmm. 5 pets, I always want to be with a person who is comfortable Ah, with yeah. animals. Wow. So, और ये बस एक चीज है, Yeah. बट ऐसे मतलब इंटरेस्ट के ऊपर कुछ ऐसा सेगमेंट्स हो जिसमें, यू नो, सारे Hmm. इंटरेस्ट वाइज लोग डिवाइडेड हो, मे बी समथिंग लाइक दैट। So Rekindle has this feature. हमारे पास इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट, डिसलाइक्स और लाइक्स के दो टैब्स हैं जहाँ पे आप अपने जो आप चीजों को, इफ यू डोंट लाइक समथिंग and you vibe with someone which is not, who's also not liking the same thing, you vibe more. It's a scientific fact. People vibe on things that they Okay, hate hate is more. a very So हमारे strong पास word. दो हैं. Let's We have stick to interests and dislikes. dislikes. Dislikes, चलो ठीक है. Dislikes. If you dislike couple of things, we'll be friends. So that's what we have in Rekindle as well. Cool, cool, cool. Any question, guys? कोई किसी को कुछ सवाल, कुछ जवाब, anything? लाखों की लोग संख्या में लोग आए तो उतना तो है ही नहीं, बट ठीक है. सो
ठीक है, Sana, thank you There's so a much. Thank you person for your who's time. asked, as a person, what problems did you face on a general dating app? Tell me. You tell me. So yeah, for a very short while I've been on dating apps, but it's like after a certain Hmm. period of time when you understand, okay, you are not interested in a person, they still keep on bugging you. Like, why don't people just Yeah. clearly understand, okay, nahi baat karna hai? So So you say that men have difficulties yes, understanding signals? yes, yes, yes. Would you I agree to also that feel statement? no, you know, so I think सबके लिए कोई ना कोई मतलब you'll find your partner. Just don't be very very desperate. Because वो दिखता है desperation, and I've Hmm. seen like men making female, like for me especially, a lot of men have made me feel super uncomfortable. And sometimes it's Hmm. just that your thoughts don't match and you don't vibe with somebody, and then बिल्कुल ना गलत वे में ले लेते हैं कुछ लोग, and then they start saying wrong things to you, people Hmm. get Hmm. after you. So ये सब Hmm. नहीं करना. I mean, maybe Hmm. somebody is not vibing with you, so just let the person be. Do you think we should have a course in our teenagers, 9, 10 standard, just we have sex education? Do we think we have a course how to talk to women for men? Would that work? आई थिंक वो तो हमको स्कूल में नहीं, हमारे को बचपन से सीखना चाहिए, नॉट ओनली फॉर boys की how to talk to females, Hmm. even for girls. I mean, now, so with the मतलब Hmm. with the a lot of things I've seen around me, so a lot of couples I've seen, I have had friends, male friends, who've gone through really Hmm. bad डिवोर्स, और अभी तो लॉ थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन बहुत बारी ऐसा भी होता है कि Hmm. फीमेल्स आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई वुडंट से Hmm. कि ओनली Right. मेन गो रॉन्ग या मेन गलत चीजें करते हैं. लड़कियां Hmm. भी बहुत बारी, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स मिसट्रीटिंग देयर बॉयफ्रेंड्स, देयर हस्बैंड्स. सो इन Hmm. जनरल ह्यूमन बीइंग्स को बचपन से, Hmm. घर से ही सिखाना चाहिए कि कैसे आप एक दूसरे के साथ इंसानियत रख के, नहीं, दूसरे जेंडर से दूसरा बात. जेंडर नहीं, Hmm. जेंडर ही छोड़ दो, ह्यूमंस के अंदर थोड़ा इंसानियत होनी चाहिए, हाउ अच्छा. दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. जेंडर को साइड में Hmm. छोड़ दो, बस बेसिक रिस्पेक्ट होना Hmm. चाहिए. How can a Hmm. man Hmm. make a Hmm. girl Or comfortable? we have a question. Men make a girl comfortable. I think it's for me. I think. नहीं नहीं, आप Or बताओ, is it for आप you? बताओ. I don't know. How can I think it's pretty you should first of all should be a good reader of the signal. It's not just what you want from that girl, it's also what her expectations are. So it cannot be a one way expectation or a one way road where you are ये मेरे को reply नहीं कर रही, this she is not doing this. So that is something number one. And number two, you need to understand that give her time. I think giving time and space is very important. And number three, I think just be yourself. Be don't pretend and don't pretend to be somebody else. Just be yourself, and if it has to be, it will be. अब तो But वीडियो just चल don't गया है. be a different person to impress. अरे यार, तुम्हारा वीडियो खराब है, मेरा तो ठीक चलता है. So that's what I'm saying. Just don't be pretentious. Just be yourself and see how it goes. Otherwise, आगे चल के बहुत दिक्कत होगी. So that's pretty much it. Yes, yes, yes. Am I audible? Okay. How to get rid of an ex who's realized they are in love with you, but you are out of love with them, but still just feel just guilty. just be बताओ, truthful, Sana, you tell. and जो सच है जैसा आपको फील हो रहा है, genuinely जाके उनको communicate करो. I don't think somebody should feel guilty for falling out of love or Hmm. falling in love. Yes, Falling but out of love. if Yeah. you do not communicate, and if you keep on playing, वो होता है ना कि आप बस you keep on acting कि ठीक है, नहीं नहीं, I'm still there, that is something जो आप गलत कर रहे हो और जिसके लिए आपको guilty Hmm. feel करना चाहिए. But otherwise, like when you've realized that you're no more in love, just go and tell the person and respect the person, give them time to heal from it. Hmm. They might react at that moment,
सो उस टाइम पे थोड़ा उनके साथ अच्छे से प्यार से शांति से डील करना है. That is what I feel. Hmm. Interesting. Interesting. Any more questions? Be practical, be yourself, be हमारे vocal. audience में we have Yeah, an there you audience go. people There who you are go. also answering the questions. Yeah, हमारे सवाल खुद सवाल पूछे खुद ही आंसर कर रहे हैं. Very nice. ठीक है. So anything else? So आपको और कुछ questions कुछ? मैं हम लोग अगर स्टार्ट करें तो हम तो 4-5 घंटे बात कर सकते हैं. But obviously, it is something Already for हम our लोग audiences. 50 minutes पे So हैं. हाँ, 50 minutes पे हमने आधे घंटे Yes. करना चाहता. Very nice. So we'll do it more. We'll discuss something else in our next IG live. But I have no other questions. So give me a shout out. Give me your energies. Give Rekindle energies. Tell something I good about think Rekindle. So Rekindle I is end on that high genuinely, note. I think Rekindle is a very nice platform. And I think, once you've been through a bad relationship, or not so good relationship, or a relationship where I wouldn't say bad, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया, but कोई चीज़ जो आपके लिए workout नहीं की है, तो second time if you want to get into something, you should have a say in that. And because I'm just saying from my experience, because when my parents got divorced, I was 2 years old, and that was back in 1996. And at that time it was more about, because my mom had responsibility कि ठीक है, she should get married again. And I also know of people who got divorced during that time only, and they waited for the time, found the right person, fell in love, and then started their life again. So it's, you are ये एक opportunity आप create कर रहे हो लोगों के लिए to find love again in life, even if things were not so good पहले relationship में. And that's really good, because सीधा एक शादी से Thank दूसरी you. शादी में लोग नहीं जा रहे हैं, लोग टाइम ले रहे हैं, लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने लिए, एटलीस्ट सेकंड टाइम, या जो भी उनका रिलेशन, इंसान ढूंढने की उनके पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है. सो आई रियली थिंक Rekindle इज अ रियली नाइस ऐप. एंड जो आपका पूरा प्रोसेस है, वेर यू फिल्टर आउट पीपल, and as you said, आपने अभी 250 लोगों Yes. को you filtered them out, even people who paid Block. money. Yeah. So Yeah. I Yeah. think while you've created a dating app, and genuinely I'm not a person who goes on dating apps, like I am not a dating app user, but still, आपका dating app, the way you've made it, and then you're also thinking about maintaining that safe space. That is something which I Yep. really, Yep. really like. Absolutely. So all the best, and I really hope Thank your you so app grows and you go global. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for your Yay! energies. Thank you. ठीक है, चलो, okay. Bye Chalo. bye. Good Take care. night. Bye. Bye. Good night.